valedictory session. Our very honorable guest and our Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, Professor Sudesh Shikaraji has joined, and our very honorable Vice Chancellor, Chief Guest, Professor R.K. Sir has also joined. Ma'am, we welcome you on the platform of your own university, of your own department, HRDC, and we also welcome you, sir, on the virtual platform of the HRDC and in our university. It's a great privilege for me. Sir is managing. So it's a great privilege for me to welcome our very respectable Professor Vice Chancellor, Professor Shikaraji, who is the president of this program today, who will preside over. And it's a great privilege, ma'am, and you are a very much supportive to the HRDC, and your way and the way of doing the things and the keen interest in the training is very much reflective in all the proposals and all the things and all the discussions that you do for the faculty here. So we are very thankful to you, and we extend the warmest welcome to you, ma'am, in your own university on the virtual platform of this workshop. And we are really thankful to you for sparing your very valuable time, because it was an international yoga day, and she was busy with the programs one after the another and constantly on the other meetings as well. But still, she has spared time for us, ma'am. It's really thankful. We really are thankful for this, and we welcome you. I also extend the warmest welcome to our chief guest, Professor R.K. Mittal ji, the Vice Chancellor of Siblu Himani. Sir, we welcome you on the online platform of this HRDC in our university, Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya. And we also extend our heartiest thanks to you for accepting our invitation and for sparing your very valuable time to be a part of this valedictory program. I also extend the warmest welcome to Dr. Mahesh Sharma ji, who is associated with the HRDC from the last few years, and has been a constant support to us in organizing a lot of programs. I welcome all the faculty members of our university and all the participants of this program, of this short-term course that was on research methodology, which we started on 15 June, and today we are winding up on 21st June. I hope that this journey, which you have traveled with us in this program, which was moving from one day to another, in which you have been listening a lot about the research, even the methods of research studies like case studies and the academic writing, and then our method and the innovation strategies of doing, and the disruptive innovations and the technologies, the areas of research publication, hypothesis, review of literature, citation. All these things have been discussed during this program. We hope that you must have enjoyed and must have learned something, and there must have been few learnings which you must have dropped here, that they are the traditional and they are obsolete, and you must have tried to find out the new paths, the new direction for your research. So with this, I again extend the heartiest welcome to all of you in this valedictory program of the short-term course on research methodology. And now I would like to hand over the dais to Dr. Subhash for proceeding with this program. शुक्रिया मैडम डॉक्टर शेफाली नागपाल जी, डायरेक्टर HRDC BPSMB खानपुर। आपका बहुत बहुत आभार है, और आप जैसे लीडर को पाकर हम बहुत प्रसन्नचित होते हैं। बहुत उत्साह और रास्ता हमें मिलता है जिंदगी का, और उसके माध्यम से बच्चों को भी आपका बहुत बहुत आभार। मैं मेरे तमाम साथियों की तरफ से जो इस 1 वीक नेशनल शॉर्ट टर्म कोर्स में जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी अनुसंधान पद्धति पर आधारित है, जो 15 जून से 21 जून तक जो आज अंतिम दिन है इस कार्यशाला का, उसमें उन सब की तरफ से मैं माननीय कुलपति महोदया का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य मेहमान प्रोफेसर R.K. मित्तल जी, वाइस चांसलर, माननीय वाइस चांसलर
CBLU चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या उनके साथ जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा कहना चाहिए। सर, हम दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और तमाम यहाँ पर टीचिंग फ्रेटर्निटी बैठी है और मुझे इस बात का ख्याल है कि जो भी इस धरा पर सब तेरे बाद है, ये धरा तेरे कारण ही आजाद है, ऐसे उजाले तुमने वतन को दिए, तुम्हारा दीपक सा जलना हमें याद है। हम सब लोग एक दीपक की तरह जलकर पूरे देश को और दुनिया को प्रकाशित करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, बल्कि उससे पहले मैं जो ये कार्यक्रम रहा है एक सप्ताह का, उसकी रिपोर्ट के लिए हमारे बीच में डॉक्टर चित्रा जी हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला से हमारे साथ जुड़ी रही और जो बहुत ही मेधावी और बहुत ही लर्नेड और बहुत ही सीरियस एक विद्यार्थी की तरह और बहुत अच्छे टीचर हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो 7 दिवसीय ये कार्यशाला रही अनुसंधान पद्धति पर, उसके बारे में, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में एक बार वो अपनी रिपोर्ट हमारे मुझे माननीय मुख्य मेहमान और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा हमारी माननीय कुलपति महोदय हैं, उनके समक्ष रखें। प्रोफेसर डॉक्टर चित्रा जी से मैं आग्रह करूंगा। Thank you so much, Dr. Subhash, for your kind words. Respected Vice Chancellor Ma'am, Chief Guest Sir, Director HRDC Ma'am, and my dear fellow course mates, a very good afternoon to all of you. First, I take this opportunity to express my gratitude to HRDC-Bhagat, Phool, Singh, Mahila, Vishwavidyalaya, Khanpur, for providing me with an opportunity to share my feedback on this 7-day short-term course on research methodology that was conducted from 15th to 21st of June 2022. At the outset, I would express my deep appreciation for Professor Shefali Nagpal for conceiving and planning this wonderful course. She has constantly been a guiding force throughout the course of the journey. Her valuable insights have made us ponder on the future of research in this country. The course was designed keeping in mind every nuance of research, and it included topics from formulating a research proposal to writing a review of literature, from developing questionnaires to writing citations. We had a total of 10 sessions and each session was brilliant. I can't complete my feedback without mentioning the wonderful sessions conducted by Professor Satish Kumar on review of literature, UGC Care Journal selection by Professor Arun Karat, sessions on academic writing by Professor Sumanjit Singh, Professor Neeraj Kaushik's session on R and R Studio, Professor Tejinder Singh's session on questionnaire development, and my personal favorite, Professor Kirti Sharma's session on case writing. We enjoyed every bit of the interaction that we had in this 7-day course. The course was systematically planned and we were given enough time to satisfy our queries throughout the sessions. At times, we exceeded the stipulated lecture timings also. I thank all the experts for being kind and patient enough that they bore with us at all times. We thought new insights into how we can better our existing volume of work and work in better directions. The course has paved a new way for us to follow. I appreciate the interactive presence of my fellow course mates throughout the course. One request that I would like to make to Ma'am Shefali, that we would like to have more teachers from fields apart from commerce, because majority of teachers that we had were from commerce and management background. Finally, I feel delighted to have been a part of this enlightening course and look forward to more academic endeavors with HRDC, Bhagat Phool Singh, Mahila Vishwavidyalaya. I end with the lines of Robert Frost in connection to my research work. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you very much, everyone. शुक्रिया मैम। मैं यहीं से जोड़ूंगा कि लहू ना हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जुबा नहीं होता, जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना घर नहीं होता। और चित्रा मैडम और आप सब लोग मुझे लगता है कि उस चिराग की तरह हैं
आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं डॉक्टर मोनिका जी से गुजारिश करूंगा जो हमारे साथ इस पूरी वर्कशॉप में बहुत शिद्दत के साथ इसमें जुड़ी रही हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक रिपोर्ट आप भी अपने नजरिए से मुख्य मेहमान और माननीय अध्यक्षा महोदया के समक्ष प्रस्तुत करें। डॉक्टर मोनिका जी। नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया है कि मैं वर्कशॉप से जुड़ी रही हूँ। मैं सच कहूँ तो जिस मंशा के साथ मैंने इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया था, उससे कहीं बढ़कर मैंने यहाँ पर पाया है। कई बार ऑनलाइन होने की वजह से हम थोड़ा और कामों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे काफी जगह पर ये लगा कि ये मुझसे मिस नहीं होना चाहिए था, इसीलिए मैं शायद शिद्दत के साथ इसके साथ जुड़ी रही हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर शिफाली मैडम का, क्योंकि उन्होंने मुझे जो है फीडबैक के लिए जो है मौका दिया है। इस 1 वीक की जो हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्स ऑनलाइन वर्कशॉप रही है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आधारित, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए कि एक शॉर्ट टर्म इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता ये सब करना, लेकिन मैडम और उसके एंटायर टीम ने ये बखूबी किया है। हमने जिन जिन चीजों की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर की थी, वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर बखूबी कवर किए गए हैं। जैसा कि हमारे वर्कशॉप में जो हमारे साथी रही हैं डॉक्टर चित्रा तंवर, उन्होंने बखूबी सभी ऑनलाइन वर्कशॉप की जो भी रूपरेखा रही है वो आपके सामने रखी है, सभी सेशंस की बिल्कुल सही मैडम ने बताया है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत जो है सेशन से नहीं, हमारी जो है जो वेरी फर्स्ट इनॉग्रल सेशन था, सीखने की शुरुआत, कुछ करने की शुरुआत वहीं से हो गई थी। जो हमारे चीफ गेस्ट थे श्री आलोक चक्रवाल, ऑनरेबल वाइस चांसलर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़। सर के जो विचार थे, रिसर्च मेथोडोलॉजी को उन्होंने किस तरह से स्पिरिचुअलिटी से जोड़ करके एथिक्स और वैल्यूज के साथ रिसर्च करने के लिए हमें प्रेरित किया। वाकई में टीचर बिना एथिक्स के, बिना वैल्यूज के कुछ भी नहीं है, और अगर वो अपनी ऑनेस्टी को साथ लेकर चले तो क्यों नहीं, वो पर्वत में भी रास्ता बना ही देता है, पर्वतों से भी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें प्रेरित किया, और उसके बाद जो शुरुआत हुई, आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बखूबी हमारा सफर रहा है। हर एक सेशन में जो भी रिक्वायरमेंट थी, मैं मैडम का फिर से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगा कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, सब अपने अपने सब्जेक्ट से ज्यादा जानना चाहेंगे। उन्होंने इस तरह से सेशंस के टॉपिक्स को जो है उन्होंने डिसाइड किया कि हर एक चीज ज्यादा से ज्यादा सबके बेनिफिट में हो, और साथ ही जो रिसोर्स पर्सन हमारे जो साथ में जुड़े हुए थे, वो सब अपने अपने विषय के ज्ञाता थे। उन्होंने हमें उम्मीद से बढ़कर दिया। हर एक सेशन से हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन, सिर्फ नॉलेज ही नहीं ली है, मोटिवेशन भी लिया है। हमारा जो इंटरेक्शन आपस में होता था, उन्होंने अपना जो ऑनलाइन होते हुए भी जो प्रैक्टिकली जो चीजें हमें दिखाई, जो चीजें हमें समझाई, या फिर ये कहिए कि जो व्यूज हमें दिए और हमसे लिए, वो वाकई में जितनी तारीफ करूं उतना कम है। मैडम, आपसे गुजारिश है कि प्लीज ऐसी वर्कशॉप आप ऑर्गेनाइज कराती रहें, ताकि हमारी तरह औरों को भी जो है लगातार जो है एक तरह से आप ये कहें कि बेनिफिट मिल सके। तो इसके साथ ही जो है मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि जो हमारे पास कंटेंट से रिलेटेड ही नहीं, मोटिवेशन भी हमें मिला है यहाँ पर। और साथ ही मैं मैडम का के साथ ही पूरी एंटायर टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने इतनी बढ़िया वर्कशॉप इन्होंने ऑर्गेनाइज की है। इट वाज सो इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच मैम। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं समय सीमा का ध्यान रखूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया डॉक्टर मोनिका जी, आप सही कह रहे थे कि हम लोग बाल्टी और लोटे लेकर खड़े थे और दरिया हमारे पास, हमारे सामने था, हम कितना उसमें समेट सकते थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कागजों के भी पेट फट गए आखिर, इस कलम में और कितनी धार करना है। वो इसलिए मतलब कलम के सिपाही है कि कागजों के भी कलेजे फट गए आखिर, इस कलम में और कितनी धार करना है। और ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, ये एक लंबी दूरी की मिसाइल हैं, जिनका मकसद नफरतों पे वार करना है। जिस प्रकार से हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी प्रारंभ में रिसर्च का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उन चीजों को लेकर कहा था। आज हमारे साथ माननीय ऑनरेबल वाइस चांसलर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी शख्सियत का परिचय करवाने के लिए मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं MSI MI BPSMV खानपुर से, उनसे आग्रह करूंगा कि सर आप कृपया करके उनका परिचय हम सब लोगों तक पहुंचाए।
डॉक्टर महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, आपसे आग्रह बिल्कुल ब्रीफ में, बस वो हम वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद द सेशन। दादा नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा आदेश प्राप्त हुआ है, मैं प्रयास करूंगा कि सिर्फ वही बातें साझा करूं जो ऐसी हों जो हमारे लिए नहीं हो। राजकुमार मित्तल जी, आप कुलपति हैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में। आप इकोनॉमिक्स विषय से संबंध रखते हैं। इस विषय के निष्णात में मैं कहना चाहूँगा कि एक बार ऐसे विचाराधीन बात करते हुए मैंने पूछा कि जितने भी विषय हैं उसमें अगर ये मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, MBA, इनमें कोर स्ट्रेंथ सब्जेक्ट क्या है, तो मुझे आंसर प्राप्त हुआ इकोनॉमिक्स इज द कोर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स। तो ये सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार के कोर स्ट्रेंथ वाले शख्सियत जिन्होंने कि हरियाणा प्रदेश से अपना जो शैक्षणिक जो इन्होंने अपनी यात्रा की प्रारंभ की थी, और हरियाणा के ही जैसे जो अपने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है हिसार में, वहाँ से आपने प्रारंभ किया अपना कार्यक्षेत्र, विभिन्न पदों को सुशोभित किया। साथ में अपने जीवन यात्रा को, शैक्षणिक यात्रा को बढ़ाते हुए आपने अपने निकटस्थ जो हमारा राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, वहाँ गए, और जो गुरु गोविंद सिंह जो इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय है, अपने आप में एक माना जाना नाम है। इसमें विभिन्न संकायें हैं, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज, एजुकेशन, उनके विभिन्न प्रशासनिक पदों को आपने सुशोभित किया है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय को समर्थन करने के लिए जितने भी अतिरिक्त फंडिंग एजेंसीज हो सकती हैं, उन सभी का कार्यभार आपके पास रहा। शैक्षणिक संवर्धन की बात की जाए तो 100 से अधिक रिसर्च पेपर आपके पब्लिश हैं, और ये वो पेपर हैं जो कि इंटरनेशनली एक्रीडेटेड हैं और जिनके साइटेशंस 500 से ज़्यादा हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार की कोर स्ट्रेंथ सब्जेक्ट्स को लेकर के इस प्रकार का विशिष्ट जो अनुभव आपके पास है, और ऐसी शख्सियत हरियाणा के विश्वविद्यालय में हरियाणा के विकास के संवर्धन में हमारे साथ बीच है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, शैक्षणिक संवर्धन में 15 PhD आपके द्वारा अवॉर्डेड की जा चुकी हैं, 6 अभी जो कार्यशील चल रही हैं, 150 से अधिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो MBA से वो आप कंप्लीट करवा चुके हैं। जहाँ तक पुस्तकों की बात की जाए, 6 पुस्तकें आप पूर्ण कर चुके हैं और 5 प्रोडक्ट्स आप पूर्ण कर चुके हैं या विचाराधीन। तो इस प्रकार के विशिष्ट विलक्षण प्रतिभा से संपन्न आज हमारे बीच हैं। मैं समय व्यर्थ न करते हुए, जैसा कि मुझे सर का आदेश हुआ और जो बातें सुनी, आज चाहूंगा कि आपके मुख से श्रीमुख से सुने, और मैं आपको आमंत्रित करता हूं आपके उद्घोषण के लिए। श्री राजकुमार मित्तल जी। थैंक यू डॉक्टर महेश जी, सुभाष जी, and I am really thankful to the Honorable Vice Chancellor Professor Sudesh ji for giving me this opportunity to interact with you all. I am also thankful to Dr. Shefali Nagpal ji, who has been interacting with me and inviting me on earlier occasions as well. And I compliment and congratulate the whole HRDC of Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya from time to time organizing such type of value-added workshops, training programs, which I feel is the need of the hour. And listening to the reports presented by the participants, the faculty members, I am really very happy that many areas have been covered, and in this short-term program, all the participants have benefited a lot by listening to the expert in the field, and I am very sure that now the quality of publication by the participant definitely will improve, and a lot of motivation has been given by the experts. Since technical issues have already been covered, and in a short time I will not speak on those issues, I just would like to have the general observations. And today the whole world is celebrating the International Yoga Divas, and the theme of this Yoga Divas, Antarashtriya Yoga Divas, is Yoga for Humanity. So, drawing an analogy from there, I think the need today is that research for humanity, that how this research is useful to the society
to the humanity, to the international community in which we live. And we all know that we are facing, or we are passing through a very difficult time, and many problems we are facing. The major one is that huge disruption in the businesses have taken place. How to revive those businesses, how to create more employment opportunities into the system, and how this adopt the technology which is disrupting in nature, which is and affecting lot many people. We all know that inequalities into the system, they are increasing day by day. At the world level, including India, we find that top 1% of the people, maybe they have 50% access to the resources. This is a worldwide phenomenon, not only in India. And therefore, how to have inclusive growth, that has become a challenge. At the same time, we also find that environmental degradation has taken place at a very fast speed. So sustainability has become a real issue today. Sustainability of businesses, sustainability of the environment in which we live, how to improve the efficiency into the system, and the concept of circular economy has entered into the research domain. Earlier, we used to follow the linear way, linear thinking or linear model of development in which take, make, and throw. We simply take the resources and ultimately throw it. But now we are converging or moving into a circular economy system whereby we reduce, reuse, and recycle. This type of strategy we are following. The essence, therefore, is that our research efforts should be directed in solving the problems which the humanity today is facing. And during my maybe 30 years of experience, because I joined teaching profession after completing my PhD, and therefore my general observation is that for the growth of knowledge, we all are doing excellent job, but many times all agree to the fact that research has very little use to this society, and hardly the researches which are published or completed, they are referred to or becomes a guideline for the businesses or the society or in handling their problem. So my simple suggestion as a faculty, all of you are faculty members, it becomes our duty that we connect with the local people, we connect with the local area, and the concept or the vision given by the Honorable Prime Minister that Atmanirbhar Bharat, this concept, how we can bring into our research, that I think now is a real challenge, and that is going to revive economic activity, whether in agriculture sector or you can say the small scale MSMEs or service sector. We have to bring innovation into the system, and the traditional model, they are not going to be successful. So how this innovation into the research, how more and more areas we can explore and then can guide the youth, because youth, we all know that agitations are going on in the country on one pretext or the other pretext that simply highlight the fact that manufacturing is not picking up, we are not able to generate much needed employment opportunity into the system.
So therefore, how our research, not only through PhD, but small minor research project, major research project we undertake and come out with some direction and some solutions to the local problem. That I think is the real issue today. And I'm very sure that in this 1 week, the short-term workshop on research methodology, you have learned and got the exposure to the techniques of doing a good research. So this is the first point, that research has to be contextualized to the real problem which we are facing. The problem could be different depending upon the subject in which we are or the discipline in which we are working. So this is one. Second, my experience, again, simply based on my experience, I am telling you that the quality of the research largely depend upon our understanding about the problem we want to explore or provide a solution. So the better the understanding or comprehension of the problem we have in mind, the better would be the quality of the research. So most of the time we take topic based on the consideration that how easily we will be able to collect the data, or how early, how soon we are able to complete the project, and also based on the fact that we have a related study or someone has completed a parallel study so as to conveniently do our work. But I think the real focus should be on the problem. Even if a small problem we are able to address, small problem, and may not provide a solution, a real solution to the problem, but give a better perspective on the topic, that also can be useful, and that will also help us in adding knowledge to the existing pool of knowledge. तो मेरा ये आपसे ये अनुरोध है कि प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझकर उस पे अपना अच्छे तरीके से जो मेथोडोलॉजी आपने समझी इस वर्कशॉप में, उसको अप्लाई करते हुए फिर अपनी कोई सॉल्यूशन दें, वो एक अच्छा होगा. और ज़्यादातर हमारा जो ध्यान रहता है, वी मेक heavy use of statistics. I am not against statistics, but it has been observed that most of the time we follow a standard methodology, and by following a standard methodology we apply standard statistical tools, techniques, use SPSS and other whatever techniques you have learned. These are very good, but these we have to understand that these are just a technique, tool to understand the problem and analyze the data and come to the some conclusion. और ज़्यादातर रिसर्च में एक ये जो आज के दिन टेंडेंसी है, वो स्टैटिस्टिकल टूल लगा के उसको वो हाइपोथेसिस को एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड छोड़ के वहीं पर छोड़ देते हैं और बाकी काम खत्म. उसमें से एंड में कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, कोई उसका किसी को डायरेक्शन नहीं मिलती कि हम क्या इससे नतीजा निकालना चाहते हैं, कहाँ पर इसका सोल्यूशन बताना चाहते हैं. जब वो सोल्यूशन हमने तो इतना टाइम लगाया, किसी ने 3 साल लगाए, किसी ने 4 साल लगाए, और वो बाय डिवोटिंग 3 years 4 years सो मच टाइम, हमारे से ज़्यादा तो उस प्रॉब्लम को कोई समझना नहीं चाहिए. तो इसलिए हमें चाहिए कि उस प्रॉब्लम के ऑप्शंस को भी हम एक्सप्लोर करें. व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, कीपिंग इन माइंड आवर फाइंडिंग्स, and simply purely based on our finding and related facts we should suggest the solutions to the problem. तो statistical tools को use करें, मगर उसको बहुत ज़्यादा heavily rely करके और उसका वो statistical analysis करके और उसकी वो बस just hypothesis accepted rejected और उसकी वो values निकाल दें और then no conclusion further or suggestion based on the things. I think it will not, it doesn't serve the purpose, basic purpose of the research. तो हम थोड़ा उसे आगे निकले, और कोई ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छा रिगरस स्टैटिस्टिक्स लगे,
सिंपल आपका ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, इंटरेक्शन, एंड देन यू कैन कम आउट विद कंक्लूजन। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में आप कॉमर्स और सब उसके हैं दूसरे सब्जेक्ट के मैनेजमेंट के, वहां पर तो हार्डली कोई पेपर होता होगा जिसमें स्टैटिस्टिक्स की बात वो करते होंगे। इट इज सिंपली अ डिस्कशन, इनसाइट of the topics and strategies they discuss, but hardly any uh, rigor of statistics is visible on these articles. तो इसको आप एक बार जरूर देखें। और लास्ट में मैं एक बात ये कहूँगा कि पब्लिकेशंस को जो मल्टी डिसिप्लिनैरिटी की बात NEP 2020 कर रही है उसको भी फॉलो करें, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट, कॉमर्स या कोई भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट्स नॉलेज बेसिकली इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। तो कोई भी आप टॉपिक उठा लें, अब आज हम कहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलप करना है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को कौन करेगा? उसमें साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, सोशियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, उसमें वहाँ पर इंजीनियरिंग साइड टेक्नोलॉजी के लिए भी देखना पड़ेगा, एंड सो मेनी ऑल सब्जेक्ट्स वी हैव टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। So therefore, multidisciplinarity, joint paper writing, working in team, ये ऐसा सा कुछ हम करें। हमारे ज़्यादातर पेपर वो अकेले होते हैं या हमारा टीम में ज्वाइंट रिसर्च वर्क नहीं होता, दूसरे डिपार्टमेंटों से भी इंटीग्रेशन कम होता है। तो इस सारे चीज़ को भी आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको समझने की ज़रूरत है और प्रॉब्लम्स को होलिस्टिकली अंडरस्टैंड करके उनका सलूशन देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि रिसर्च में आप एक बात देखेंगे कि इफ यू इंटरेक्ट विद द डिफरेंट पीपल देन दे विल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द इशू, एंड थ्रू डिस्कशन यू विल गेट ए बेटर व्यू पॉइंट। सो देयरफॉर more and more discussion, more and more interaction, and joint project. These I think should be promoted during the research, and these few points I thought will help us in having a good quality research, and research which is required by the society, and which will serve the purpose and not simply for the sake of getting publication in any journal or getting degree for a job, because we devote so much time and no one else can better understand those issues than teachers, because through teaching, research, through teaching we get insight into the problem, then through discussion by the student and other colleagues we get better understanding, and then ultimately apply through research, again improve the quality of the teaching. So teaching, research, teaching, that help this circular tendency then definitely will help us. So with these words, I thank again the Honorable Vice Chancellor, Professor Sudesh ji, and Dr. Shefali Nagpal ji for giving me this opportunity to interact with you all. My best wishes to all the participants. Thank you. Namaskar. थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर। अनुसंधान की दिशा दशा और अंतर अनुशासनीय बनाकर उसको किस प्रकार से समाज के लिए उपयोगी बनाया जाना चाहिए, उसको लेकर आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से समाज के लिए उपयोगी हो सकती है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि या रब ये जिंदगी इस हालात ना पहुँचे कि नज़र के सामने हो और हाथ ना पहुँचे, कच्चे घरों के बच्चे भी खपा होंगे बादलों से अगर उनके घर तक बरसात ना पहुँचे। मुझे लगता है कि इस अनुसंधान पद्धति से हम लोग घर घर तक ज्ञान की बरसात लेकर जा पाएंगे। हमारे साथ या हम उनके साथ कहिएगा डॉक्टर शेफाली नागपाल जी, जो बहुत ही कमाल के लीडर हैं, वो उनके साथ हम जुड़े रहे और उन्होंने हमें इन पिछले 6-7 दिन में इतना सेंसिटाइज कर दिया, या मुझे शब्द प्रयोग करना चाहिए कि इतना डरा भी दिया कि ऐसा लगता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो हमारे लर्नेड वाइस चांसलर माननीय कुलपति महोदया डॉक्टर प्रोफेसर सुदेश शिकारा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में जब हमारा ये कोर्स प्रारंभ हुआ था तब भी आपने आप लोगों को आशीर्वाद दिया था। मैं ये कहना चाहूँ और डॉक्टर शेफाली नागपाल को इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाऊंगा
कि अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है, अगर भाव शुद्ध हो तो छोटा सा धागा भी रक्षा बंधन हो जाता है। तप त्याग तपस्या करना सबके बस की बात नहीं, संघर्षों में पड़कर मानव माथे का चंदन हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्व को का परिचय करवाने के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ डायरेक्टर डॉक्टर शेफाली नागपाल जी से आग्रह करूंगा, हम सब पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, प्लीज डॉक्टर शेफाली नागपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। ये बड़े भाइयों का काम होता है तारीफ करना, इसको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो मेरे पास आज एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है to introduce my honorable vice chancellor with all the participants of this program and with the chief guest of this program. It is I really feel privileged about it, and I would also welcome her and thanks for being so cooperative, for being so supportive, and for being so humble towards the HRDC, and I would rather say towards me. Thank you so very much, ma'am. And let me take this proud opportunity of introducing her with you all. She is presently the Vice Chancellor of our university, Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, which is the first women university of North India, providing the education from the pre-primary to the doctorate level. Prior joining this institution as the Honorable Vice Chancellor, she has served as a professor in the University School of Management at Kurukshetra University, Kurukshetra, and as the Director of Women's Studies Research Center and the Director of Human Resource Development Center of Kurukshetra University. She has been awarded with the prestigious Commonwealth Fellowship Award in the year 2002 to 2003 at Cardiff Business School, United Kingdom. She has also been awarded with the postdoctoral fellowship in the year 2009 and 10 by the University Grants Commission. With an experience of more than 31 years, she has a blend of academic, administrative, and the research, and she has also published number of the number of the research papers in the area of banking, financial services, and management. She has an international exposure for the academic exchange program. She has visited the United Kingdom, like Oxford University, Cambridge University, Warwick University, London School of Economics, and the University of Sydney. And she is actively involved in the UGC program on capacity building for women managers in the higher education as a trainee, as a trainer, and also as a coordinator. And she has coordinated a lot of training of trainers program. She is, we are privileged to have her because she is also the member of the very prestigious editorial board of the various research journals and member of the various statutory bodies like the Executive Council, Academic Council, and the Finance Committee. She has initiated the revision and the upgradation of the syllabi of the MBA program as per the requirement of the industry. So she has tried to bridge up the big gap which lies between the academia as well as the industry. So that is the very practical aspect that she has added to the the professional course of management associated with the implementation of the choice-based credit system in the Kurukshetra University. She has been one of those pioneers members who have initiated this program, not only in the Kurukshetra University, but in Haryana as well. She has also contributed as an academician by organizing various seminars and contributing to the various seminars. Apart from it, she has also organized the international seminars on a very important indigenous knowledge base of management, that is on relevance of Gita in the modern day management in the year 2016, and then also a very important topic, that is de-risking Indian agricultural crop insurance way with the help of the NABARD. Again, she is a member of the various expert committees like UGC, AICT for the accreditation and the administration of the grants, and member of the Association of the Commonwealth Scholars and Fellow, SF, New Delhi. And she is also a person who is, she is dedicated to the cause of the women. And she has an inclination and orientation, and I think that makes us all proud of having her as a Vice Chancellor in our university. Ma'am, it's a great pleasure to have you here, and may I invite you here for your words of blessing to all the participants of this course. So, thank you, Dr. Shefali.
Most respected Dr. R.K. Mittal, Vice Chancellor, Chaudhry Bansilal University, and the chief guest of this valedictory session, Dr. Shefali, Dr. Mahesh Sharma, Dr. Subhash, and all the other participants. I think you have had a very rigorous short-term online program on research methodology. I know it's a very challenging time for teachers to learn research online, that too in a situation like this. But I'm sure the way the report has been presented by the participant, it has been an interesting affair. Dr. Shefali has roped in the best people from the country in the field of research, and also the best Vice Chancellor, because I know Dr. Professor R.K. Mittal, who is an economist and a great teacher, in addition to being a very good Vice Chancellor. He's a real intellectual. I meet so many people, so many Vice Chancellor. He's so, बिल्कुल वो गंभीर प्रकृति के हैं. He's a man of action. He doesn't talk much. He delivers a lot. So I'll appreciate Dr. Shefali and her team's effort in, bringing out the right set of people for the participants in this short-term program. I know Professor Mittal for more than 3 decades. I've seen his journey. And in whatever role he had been there, he has been doing research. So, you have people. When I look at academia, at certain point of time, जो teachers होते हैं या participants होते हैं, उनका research को लेके belief system में कहीं dissonance रहती है. Most of the time, they believe that the research that they are doing is not going to be utilized by the society. And the problem, very rightly as pointed by Professor R.K. Mittal, lies straightway with the issue of identifying the research problem. We replicate research problems. The genuine research problems are not identified. And in last, I have been observing, 15 years, the more focus that has come after this API scores have come on the quantitative aspects of research rather than what are we researching. So the very fact that the researchers are just for the sake of doing research, API score or something like that. Research, we do it for individuals' benefit, like our API score improves, our publication, they increase in numbers, citation comes in. And at certain point of time, it also helps the institutions. But, the societal impact is missing, and it was pointed out in the inaugural session also. So it is high time the higher education institutions should look at research with a different perspective. And when we started our career, say 35 years back, research in management and commerce was not so competitive. We had very good professors, even without doing any kind of research. It was teaching oriented, this thing were there. But we have seen over the years, the higher education institutions have realized that research has to be an integral part of higher education of institutions of learnings. Because इससे teaching भी improve होती है, society से connect भी बढ़ता है, and teacher becomes more relevant for the society. So I have not been a very great researcher, to be honest, but my experiences with the research says that it has to be intuitive. It has to have the people, those who are recognized more as researchers are the people, those who have common sense, those who keep their eyes and ears open. I would like to share my own experience of research when I applied for postdoctoral fellowship with the British Council. At that particular point of time, venture capital, when you do researches on the
current topics that are coming in. As if I would suggest for this group, you should be aware about that sustainable development goals. Any research which is in line with these sustainable development goals have a better chances of being published. So now what you choose to research on is very, very important. So this is one thing I would like to share with my own experience, that the time when we were doing researches, the methodologies were not very statistically driven. Now these days you have a lot of data is put in, it is processed, very simple things are made very complex. So I think it is high time when we as academia, we as researchers should focus on this particular aspect, that what are we researching on. Up till a level, you know, API score, it is fine. But after that, there has to be a point where your research has to be meaningful. It has to be problem solving in nature. And this can happen when you are aware about what are the contemporary issues happening in your respective area. When I talk about contemporary issues in management and economics, like the way how the technologies are impacting the organizations, how the organization structures are changing, well-being of employees or efficiencies, and then tracking the team of productivity of the teams, shaping company cultures. You know, we find that earlier what used to happen, the time period for businesses to be top leaders used to be very high. General Motors remain at, business leader for almost 50 years, more than 50 years. Now you think of one business leader, 3 साल बाद वो business leader का पता ही नहीं गया कहाँ. Big Bazaar you talk about, Nokia, so many. So it is very, very important to keep your eyes on what is happening in the marketplace. And if you do researches revolving around those topics, there is a possibility of getting publications as well as finding solutions. These days for teachers of, say, management and commerce, the financial technologies that are coming in, how they are impacting the efficiency of the organizations, and then something related to skill gaps would be appreciated if we are doing it. So it is very, very important that when you identify the research area, that has to be contemporary and that has to be, say, in time. So these are my some of the observations. And one more thing I observed in this group, more than researchers, I could look a lot of talent in terms of, शायरों का group ज़्यादा मुझे लग रहा था. Dr. Subhash, it was really a pleasure to see how you connect things. So I think I'm sure you might have had a lot of learning during your this short-term program, and this group should remain intact. You should, multidisciplinarity into research is very, very important. When you are doing a research on cyber security, people from operations, people from computers, people from law, they should sit together, because it is a time when you cannot do your researches in silos. That's what I say is. I observe it also that it is very, very, very important for the academic fraternity, the teachers and the scholars to have different perspective to the same problem. So with these words, I again appreciate the effort of Dr. Shefali Nagpal's team for conducting such good programs, which are bringing a good name to Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya. And I'm sure you would make efforts to make the faculty of Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya equally enlightened. More participants should come out from our own faculty also in future. So I once again congratulate the participants for such I can see Gunjan also here, Dr. Bhupender, a lot of people. So with the once again, thank you, Professor R.K. Mittal, for sparing your valuable time for this program. Thank you all. थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत आभार है. मुझे इसे एक कहावत के साथ शुरू करना चाहिए कि एक चीनी कहावत है कि
अगर 100 शेरों का एक लीडर एक कुत्ता हो तो 100 के 100 शेर कुत्ते की मौत मरते हैं, और अगर 100 कुत्तों का लीडर एक शेर हो तो 100 के 100 कुत्ते शेर की तरह लड़ते हैं। इसको एक मतलब कहावत है ये, और ये सही भी है, हमने पूरे इतिहास में इस बात को देखा है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में आप आए होंगे, आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों को देखा होगा, और आपको मालूम होगा, आपने एक नाड़िया वैद की तरह होता है वाइस चांसलर की, वो एक बार हाथ लगाते ही आपने सब चीज़ों को समझ लिया होगा। किस प्रकार से आप इस महिला विश्वविद्यालय को, गांव के विश्वविद्यालय को आप किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो विश्वविद्यालय उसका नाम भी है, और किस प्रकार से उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय और नंबर 1 महिला विश्वविद्यालय की तरफ ले जाने का मुझे लगता है कि आपका ख्वाब जरूर होगा। इसलिए मुझे कहना चाहिए कि चिलचिलाते दिवस हो कि घनी रात हो, आंधियों के सबब हो कि घनी बरसात हो, जिंदगी के सफर की हमें क्या फिक्र जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ हो। मैं इसी महिला विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय, राजकीय महिला महाविद्यालय सोनीपत का ही एक शिक्षार्थी हूँ, एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ यहाँ पर। आपका आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ बना रहेगा। और आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर गुंजन का जो आप अभी नाम ले रहे थे, पूरे वर्कशॉप में मैं स्क्रीन पर रहा, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी का इसमें हमारे बहुत सारे जो लोग आए वो मैनेजमेंट से और दूसरे कॉमर्स विभाग से काफ़ी लोग आए, तो उसमें थोड़ा बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी थी कि हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन डॉक्टर चित्रा यहाँ पर बैठी है जिन्होंने रिपोर्ट भी पेश किया, और डॉक्टर गुंजन, इन दोनों लोगों ने इतने सवाल पूछे और इतने सवालों के जवाब दिए, और मुझे लगता है कि हम जैसे जो लोग हैं ना, अपने मित्रों से जो सहपाठी होते हैं उनसे ज्यादा सीखते हैं। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर गुंजन ने उनमें से एक है। आप डिपार्टमेंट ऑफ होटल टूरिज्म एंड मैनेजमेंट महर्षिदान विश्वविद्यालय रोहतक से ताल्लुक रखती है। मैं भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे बहुत ही लर्नेड डॉक्टर गुंजन से आग्रह करूंगा कि आप मुख्य मेहमान का, अध्यक्ष महोदय का और तमाम लोगों का आप धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर गुंजन जी प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच सर। इतने भारी अक्षर बोल दिए आपने मेरे लिए, थैंक यू सो मच। वेल, आई हैव बीन गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थैंकिंग, व्हिच इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिग इन द सेंस क्योंकि इस मोमेंट तक सब एक तो वैसे ही थक चुके होते हैं कि सेशन इज अबाउट टू बी ओवर, अब बस करो, अब थैंक्स नहीं सुनना है, बट आई हैव टू डू दैट बिकॉज दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. So I would like to express my gratitude and thanks to the 2 veterans who are here. Our chief guest, Professor R.K. Mittal, Vice Chancellor CBLU, Bhiwani, and Professor Sudesh Chikara, who is the Vice Chancellor of Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, for their esteemed presence and their words of wisdom. Actually, जब हम बोलते हैं तो हम 3 घंटे का सेशन लेते हैं और उसमें क्रक्स निकलता है सिर्फ 5 मिनट का, लेकिन जब वाइस चांसलर्स बोलते हैं वो 15 मिनट बोलते हैं और उसमें इतने सारे विजडम वाले एक्चुअली चीजें होती हैं, बिकॉज दैट इज व्हाई वी कॉल यू वेटरन, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। दैट जैसे घर में कहते हैं ना, जो घर में बड़े होते हैं, सो सिमिलर इज हियर, वी ऑल आर टीचर्स, बट आप हमारे लिए बड़े लोग हैं और आपके वो 15 मिनट के अक्षर हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर एंड मैम, and especially I know Sudesh ma'am, I have worked with her, I know her, that she's such a soft and a lady who has such a good nature. I got the opportunity to work with you ma'am, and those days were actually wonderful. Thank you very much ma'am. And then I would like to thank the lady who is behind this wonderful show, that is Professor Shafali Nagpal, who's always my inspiration when it comes to being a strong woman, a strong headed personality. I always look up to her. All the administrative staff of UGC-HRDC Khanpur, who has been supportive, either it was online or it was offline, and also the team of intellectuals, well, we all, who have joined this course and made it interesting, interactive, and also has raised the bars of this course. I'm very happy that even in the online session, even if we were not able to look at each other's faces, we were able to interact, and that was something very wonderful. Thank you everyone. Thank you so much for being a part of this course and the valedictory session. Hope we will meet soon again. Thank you so much, everyone. Thank you, डॉक्टर गुंजन जी, आपका बहुत बहुत आभार है, आभार व्यक्त करने के लिए। इन 4 लाइनों के साथ मैं डॉक्टर शेफाली जी को आमंत्रित करूंगा कि सन्नाटे को, जब हम इस कार्यक्रम में आए थे तो ऐसे लग ही रहा था डॉक्टर गुंजन जी के सन्नाटे को कितना चीरा जा सकता है, खुद से आखिर कब तक बोला जा सकता है, और सैलाबों को ही दुनिया माने बैठे हो, दरिया का रुख भी तो मोड़ा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये दरिया का रुख मोड़ने जैसा होता है, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं।
डॉक्टर सैफ अली नागपाल जी, मेरे शब्दों को तो आपने इग्नोर कर ही दिया था, किसके शब्दों को इग्नोर करोगे। मैं आपको बहुत ही आदर के साथ गुजारिश करूंगा कि आप अपना संबोधन हम लोगों तक पहुंचाएं, प्लीज डॉक्टर सैफ अली। संबोधन तो हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे आज के जो प्रेसिडेंट हैं मैडम प्रोफेसर सुदेश शिकारा जी, दोनों दे चुके हैं। उसके बाद कुछ भी कहना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, पर मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगी दिल से कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमेशा सिखाते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस सीखने सिखाने के दौर में आप लोगों का जो आशीर्वाद है हमारे इस HRDC के साथ और हमारे साथ बना रहेगा। तो मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारी जो वाइस चांसलर है उनका बहुत बहुत दिल से आभार देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनको व्यक्त करती हूँ। और धन्यवाद व्यक्त करूंगी यहाँ पे डॉक्टर सुभाष जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर वो मंच संचालन करते हैं। अगर ये कार्यक्रम ऑफलाइन होता तो शायद आपका जो ये संचालन है और भी सब लोगों को बहुत दिल से और ज्यादा छूता। और मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी, शुभकामनाएं कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को किया है, निभाया है और कहूंगी साथ में इसके जिया भी है। पर आप लोगों ने जैसा मुझे वादा किया था कि आप लोग अपना जब रिसर्च आगे करेंगे उसका आप अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। तो मैं उम्मीद रखूंगी कि आपका वो फीडबैक और आप लोगों के वो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ आगे शेयर होंगे एंड दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू फॉर दैट। धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर महेश जी का, जो हमेशा डिस्पाइट ऑफ ऑल द बिजी शेड्यूल, चाहे वो कहीं पर भी व्यस्त हो, पर इस HRDC के लिए अपना समय निकाल लेते हैं। ये आपका जुड़ाव है, ये आपका लगाव है इस डिपार्टमेंट के प्रति और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी प्रतिभागियों को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन आई थैंक्स आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर एंड द चीफ गेस्ट ऑफ टुडे। थैंक यू मैम, इट्स रियली वेरी नाइस एंड वंडरफुल टू बी विद यू मैम, थैंक यू। और आप सब लोगों के अगर कोई जो सजेशन है जो आप लोगों ने दिया है, जैसे चित्रा जी बोल रहे थे, वी विल ट्राई टू रोप इन लॉट ऑफ अदर रिसोर्स पर्सन, दो भी रोप इन, हम जरूर दूसरों को भी इनवाइट करते रहते हैं समय अनुसार। पर इस बार ये कोइंसिडेंस रहा कि जिन लोगों से पूछ रहे थे वो समय दे रहे थे और जैसे जैसे समय मिलता चला गया उन लोगों को उन एरिया से हमने पिक कर लिया। और इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी लोगों को बुलाना थोड़ा ज्यादा ठीक रह जाता है। और मैनेजमेंट क्योंकि इट टेक्स द फील्ड फ्रॉम ऑल द डिस्कोर्सेस, तो वो लोग इंटरडिसिप्लिनरी में बात बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है इस HRDC के थ्रू। इट्स नॉट बिकॉज दैट आई बिलोंग टू दैट फील्ड, बट इट इज माई एक्सपीरियंस ओवर द पैसेज ऑफ टाइम इन दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, खासतौर पे साइंसेस से। पर इंटरडिसिप्लिनरी में आके उनके अपने जैसे जो रिफ्लेक्शंस है ना वो बहुत ज्यादा होती है और कई बार वो बिल्कुल ही ऊपर चला जाता है। कई बार हमने ये कोशिश करी है इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट में बहुत स्पेशलाइज्ड लोगों को बुलाने की, तो पार्टिसिपेंट्स कहते हैं हमें तो ए भी नहीं पता, आप तो जी की बात कर रहे हैं। तो वो वाली बात, वो वाला लेवल आता है उन केसेस में। पर हाँ, आप लोग अगर स्पेसिफिकली एक सोशल साइंस के ऊपर करने के लिए तैयार हैं, एक ह्यूमैनिटीज पे करने के लिए तैयार हैं, जो मैं पहले फ्लोट करती थी अब नहीं करती हूँ, अब मैं इंटरडिसिप्लिनरी करती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लोग आते ही नहीं है। 20 नंबर भी एक्यूमुलेट करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि 20 प्रतिभागी भी आएंगे उस प्रोग्राम में कि अगर मैं सिर्फ सोशल साइंसेस का ऑप्शन रखूं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज माई लिमिटेशन, बट स्टिल डेफिनेटली योर सजेशन इज वेल टेकन एंड थैंक यू। और मैं यहाँ पर सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप जितने भी सजेशन हमें देते आए हैं, अनऑफिशियल सजेशंस जिसको मैं बोलती हूँ, है ना, जो आप लोगों का फीडबैक है, अनऑफिशियल फीडबैक है, उसने इस डिपार्टमेंट को ग्रो किया है। आप लोगों ने जिनके बारे में हाँ करी है वो यहाँ निरंतर आते रहे हैं, जिन लोगों के बारे में ना करी है वो कभी नहीं लौटे हैं फिर इस डिपार्टमेंट में एज अ रिसोर्स पर्सन। ये ध्यान हमने जरूर रखा है इस बात का। तो आप लोग अनऑफिशियल भी अगर देते हैं फीडबैक तो हम उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रखते हैं। और मैं ये आप लोगों के सुझाव, ये आप लोगों का जो एक दिल से जो मैं बोलूंगी कि आप लोगों का जुड़ाव जो इस डिपार्टमेंट के साथ है और इन कार्यक्रमों के साथ है और जो सीखने की जिज्ञासा आप सब लोगों के साथ है, उसका हम बहुत आदर करते हैं और पूरे सम्मान करने की कोशिश भी करते हैं। तो आप सब लोगों को मैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
आप लोगों की जो रिलीविंग है, क्योंकि मेरे जो स्टाफ, एक इकलौता स्टाफ है मेरे पास, एक ही क्लर्क आजकल पिछले 2 सालों से, 1 साल से, तो उस बेचारे की भी इलेक्शन ड्यूटी लग गई है आज और कल की. Somehow we will try to send it by today evening or by today night. आज हम सुबह से वो बेचारा करके गया है, आज हाफ डे की ड्यूटी लगा गया है 2 घंटे की. पर अगर इन केस थोड़ा लेट भी हो जाती है तो प्लीज बियर विद अस, और सर्टिफिकेट आपको विद इन अ वीक आपको इशू हो जाएगा. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. मेरे को लगता है सारे ये अपना STC का ग्रुप देखेंगे कि आज कोई लिंक नहीं आया, आज कुछ नहीं करना.